Good morning, gentlemen. I'm going to talk to you about the Battle of Iran. I'm not going to talk about the news. The news तो आप जानते हो क्या है that the Iranian president and the Iranian supreme leader Khomeini और उसके leaders have been killed. But let us examine हुआ क्या है आगे. सबसे पहले याद रखिए that in any battle among the principles of war, the most important thing is intelligence. And the CIA and Mossad, the Israeli intelligence, I think was super, first class, and they knew all the whereabouts of the Iranian leadership. With the result, they could pinpoint, and the attacks were very, very lethal. And मेरी news के मुताबिक, information के मुताबिक, 48 leaders of the Iranian revolution, including the chief, that is Ayatollah Khomeini, have been killed. So, पहला जो principle of war was followed, the leadership was destroyed. Second is the intelligence, offensive action, and results. Donald Trump has said that we have achieved our objectives and we are looking forward to negotiate with the Iranians. Iranians ने retaliatory attack किए, but the defense, which is also part of principles of war, was very good, and with the result that they have not been able to do much damage to the 8 countries which they have attacked. So it has turned out to be a Shia-Sunni conflict because the countries attacked were all Sunni and Iran is a Shia country. ये offensive action the merits can be seen from the fact कि उनके bombers जो थे, the B-2, they flew off from the United States, flew 2,500 miles to Iraq, bombed and came back at the same time in one sortie. And they were dropping 2,000-pound bombs at the missile centers and the launch centers, including the atomic centers, which Iran may have developed. So Iran had very poor intelligence, very poor defense, and सबसे बड़ी जो ईरान का ड्रॉबैक था कि they were living in a fool's paradise. You see, कोई भी war होती है, you have to be realistic. And maybe they were not very realistic. उन्होंने सोचा कि रशिया एंड चाइना उनके सपोर्ट में आएंगे, बट जैसे वो पुसी कैट होता है, the Russians and the Chinese decided this is not the right time to antagonize America and get involved with it, and so they stayed away and Iran was left alone. Now look at the plight of Iran. 48 of their top leaders have been killed. The offensive action against Iran is successful, and Gulliad Dihut's theory of warfare that air warfare will be the decisive result has been proved true. In fact, the Americans or the Israelis did not have any boots on the ground in Iran. ये याद रखिए, कोई soldiers उन्होंने नहीं launch किए, and yet Iran is hard pressed, and मेरे ख्याल में Iran has been defeated already. अब क्वेश्चन क्या है कि ये लड़ाई कितनी देर चलेगी? लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि कैप्टन बताइए ये वॉर चलेगी, क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर बनेगी? नाउ लेट मी टेल यू देयर इज गोइंग टू बी नो थर्ड वर्ल्ड वॉर. सबसे पहले चाइना एंड रशिया डोंट वांट टू फाइट अमेरिका इन सपोर्ट ऑफ ईरान, एंड सेकेंडली the Iranians cannot fight a sustained campaign and launch World War III. There is no possibility. So मेरी ओपिनियन में है कि द चाइनीज लीडरशिप द ईरानियन लीडरशिप इज गोइंग टू केव इन, जैसे कहते हैं ना, घुटने टेक देंगे, and it will not be long before they negotiate and agree with the American terms. Donald Trump has already said that he's going to take over Iran. Well, let us see if he can do that. But he's a very shrewd man, so he knows what he's talking. He was the first man who gave the information that Ayatollah Khomeini is no more. That shows his intelligence. And then the intelligence of the CIA, they had every information about Iran, and they had their moles planted all over. Mossad had already infiltrated the topmost echelons of the Irani leadership, and ये भी एक principle of war है. So, gentlemen, we are reaching so many problems here. We are seeing that what is happening is that Iran is defeated, and now what happens next? मेरे ख्याल में लड़ाई मैक्सिमम एक हफ्ता और चलेगी, and then it will be all over bar the shouting. Well, लड़ाई चल सकती है आगे, पर ये मेरी असेसमेंट एट द मोमेंट. और अगर लड़ाई आगे चलेगी तो फिर कोई एक्सटर्नल फैक्टर आएगा बीच में. इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड अमेरिकन इसराइलीज उन्होंने
एक ऐसा जादू चला है that the Iranians do not know क्या हो गया उनको. They have already lost, I think, the will to fight. And lot of celebrations भी हैं ईरान में कि ये जो टायरेंट है आयतुल्ला खमानी, जिसने हजारों ईरानियन यंग वुमेन, चिल्ड्रन एंड उसके जो ओपोनेंट्स थे उनको फांसी पे लटकाया या गोली में से मार दिया. एंड वहाँ सेलिब्रेशंस भी है, कुछ लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं क्योंकि अभी भी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स वहाँ घूम रहे हैं. पर उनको एक लेसन दिया गया कि वेदर आप सरेंडर कर जाइए तो आप बच जाएंगे, नहीं तो आप बचेंगे नहीं. सो दीज आर दी हार्श फैक्ट्स विच वी मस्ट बेयर इन माइंड. पर एक फैक्ट यह है जो मैं यहाँ मेंशन करूँगा कि इंडिया और पाकिस्तान में जो सुन्नी मुसलमान हैं वो शोर मचा रहे हैं कि जी आयतुल्ला का मार दिया और वो एजिटेशन कर रहे हैं. आई हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाट इंडियन मुस्लिम्स एंड पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैव टू डू विद आयतुल्ला. जबकि सारे मिडिल ईस्ट में कोई एजिटेशन नहीं हो रही एंड लोग बहुत खुश हैं, मिठाई बांट रहे हैं. दे आर वेरी वेरी हैप्पी दैट आयतुल्ला इज नो मोर. Ayatollah ने काफ़ी देर राज किया. He came into power in 89 and 37 years he played hell into the Iranian and the world system and he was the biggest terrorist in the world. खैर gentlemen, ये सब कहानी अब पास हो गई. Ayatollah जी is now sitting in the next world and we must remember that any war which is fought must be fought as per the principles of war which was enunciated by Field Marshal Clausewitz. एंड इसमें ऑफेंसिव एक्शन जो है, जो आप देखिए अमेरिकन का ऑफेंसिव एक्शन था, इंटेलिजेंस थी, फ्लेक्सिबिलिटी थी एंड कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स. यू सी, जब भी आप कोई चीज़ अटैक करें इट मस्ट बी विद कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स सो दैट देयर इज अ रिजल्ट. एंड दैट रिजल्ट वाज आल्सो देयर बिकॉज द अमेरिकन हैड ट्रेमेंडस कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स. Even the first attack launched by the Israelis was with almost 200 aircraft and they bombed the hell out of the Iranians. ईरान perhaps thought they're going to get some help from Russia and China, but मैं पहले से ही जानता था रशिया चाइना नहीं आने वाले to any help of Iran. खैर जेंटलमैन, वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ माई वीडियो. मेरे ख्याल में आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो. आप सब्सक्राइब करिए and share the video and give your comment and I'll be more than happy to answer your questions. पर एक बात याद रखिए, दिस इज नॉट ए न्यूज़ आइटम आई एम गिविंग यू. मैंने एक असेसमेंट दिया है कि द प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर हैव बीन फॉलोड बाय द Israelis and the Americans and they have won the battle. Of course, war is a very flexible thing. It may continue or may not continue. We don't know. But as it stands, I will say Jai Hind and give you a kiss and say goodbye. God bless.